Okay. Yes, very good evening, my dear students. So today I'm going to start with the topic called locomotion and movement, and we are going to make it happen within 2 classes. This is shot number 1, one shot number 1. Okay. So in that case, to start off with the chapter called movement and locomotion, what we need to understand, क्या समझना है हमें, what we need to understand is what is the difference in movement and locomotion. So movement and locomotion, fine. Now, in movement and locomotion, or locomotion and movement, what is the most important thing? Yes. The important thing about movement and locomotion is, what is the difference? The difference is, see, movement means movement of the body parts. Fine. So movement of body parts is called movement. And in locomotion, there is a displacement of body from one place to another. So what is the difference in movement and locomotion? In locomotion, you need to change your position. When Tom runs after Jerry, they show movement or locomotion. Changing their position means locomotion. And movement means, when we talk about Hydra, ये जो Hydra है, Hydra, they have got tentacles. क्या है इसमें? They have got tentacles. Now, whenever there is a food, they're going to this, by the help of the tentacles, they're going to get hold of the food. ये tentacles से क्या करेंगे? Food को पकड़ लेंगे. This is, the body is sessile. The body is not moving. The body is sessile. Only one of the part is moving. जब body एक जगह पे है और body के कुछ part move कर रहे हैं, we call that as what? Movement. But when there is a change in position, एक जगह से दूसरी जगह पे जब वो body पहुंचता है, we call that condition as what? Locomotion. We call that condition as locomotion. Second. Good. Okay. Now, so this is movement and locomotion. Now, when we talk about this, so ये क्या है? ये movement है. What is this? This is locomotion. Say in locomotion, why an organism needs to move? So Tom runs after Jerry for what? For food. Jerry runs away from Tom. किस लिए? To save life. So both of them are moving. Both of them are showing locomotion. Purpose different है. एक जान बचाने के लिए, एक खाना खाने के लिए. Now think about it. So for food, one should go for locomotion, and then for shelter, one should go for locomotion from one place to the another. And then mating partner, for finding the mating partner, one should locomote from one place to the other. And then for water, for getting water, one should locomote from one. So in grassland ecosystem, what happens? The many of the grazers, जो grazers हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं from one place to the other. So 3-4 kilometers, even some more than that, just to have water, they move from that place to this place. Got the point? So क्या दिखाते हैं वो? What they show? They show locomotion. I think this is what is movement and locomotion called. Can you tell me what is the study of movement and locomotion called? The study of movement and locomotion. Yes? Kinesiology. The study of movement and locomotion is called kinesiology. Kinesiology. It is a study of movement and locomotion. Fine? So that's very important. Okay. Now, so this is about the first idea that we have got. यहाँ से क्या समझ में आ गया? कि movement और locomotion में difference क्या है? What is the difference between movement and locomotion? Now we need to understand about why this and what kind of movement can take place. Now when we talk about movement, we talk about movement. When we talk about movement, so movement normally can be muscular or can be non-muscular. ठीक है? Non-muscular movement हो सकता है, muscular movement भी हो सकते हैं. So majority of time, like as because we are vertebrates, हमारा जो movement है, so majority of our movement are dependent on what? Muscles. So muscular movement में क्या आएगा? Locomotion आ जाएगा. Breathing occurs by the help of what? Tell me the 2 types of muscles which helps in breathing. Intercostal muscles, that is the muscles present in between the 2 ribs. One is external intercostal muscle, and the one is internal intercostal muscles. So दो तरह के muscles होते हैं, एक है external and the one is internal. And then there we have got diaphragm. क्या है वो? The dome shaped structure. And that is the unique characteristics of all mammals. Diaphragm उस हर एक organism में नहीं है. Now, breathing occurs by the help of muscular movement. Offense and defense. बोलो, offense and defense. Defense तो आपको जब रिजल्ट निकलेगा पिताजी से मार खाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? Defense
ये ना ऑफेंस, जब ऑफेंस का टाइम आप लोग का अभी, दिस इज द राइट टाइम फॉर यू टू गो फॉर ऑफेंस, एंड आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट द रीजन व्हाई यू शुड गो फॉर दिस ऑफेंस. ऑफेंस होता है ना कभी कभी, हाँ, सो ये ऑफेंस है. सो ऑफेंस मींस, या, सो फॉर दैट फॉर यू नीड टू हैव व्हाट, यू नीड टू शो सम व्हाट, मूवमेंट, दौड़ के मारना, ये सब है ना, ऑल दिस रेज, यू नो, सो ये एड्रेनलिन रश. सो दिस इज इट. Capturing and ingestion of food, very very important. Capturing and ingestion of food. Capturing and ingestion of food. All these are done by the help of muscles. Capturing and ingestion of food. है ना, आप भी करते हो ये. Capturing and ingestion of food. For that, what is needed? Muscles is needed. So these are muscular movements. So there's some non-muscular movement. So movement can be of two different types, muscular as well as non-muscular. ठीक है? Now यहाँ पे external body parts associated है. In muscular movement, the external body parts are associated, but for non-muscular movement, the external body parts are not associated. Non-muscular movement में भी movement होता है. Anybody who can tell me any type of non-muscular movement of something? Think about this. What is this? This is amoeba. This is amoeba. This is amoeba. बोलो कुछ non-muscular movement बोलो. Good. So ये pseudopodia है. यहाँ पे food है, solid food. So they are going to see by this particular process what they can do is, यहाँ पे cytoplasm है. So cytoplasm के movement में इस तरह से movement होगा so that they can have this pseudopodia. Pseudopodia. So by the help of this pseudopodia, they are going to get hold of this food inside and this vacuole. वहाँ पे वो digestion हो जाएगा. So यहाँ पे muscular movement नहीं हो रहा है. यहाँ पे muscular movement नहीं हो रहा है. So non-muscular movement is shown by amoeba. Non-muscular movement is shown by WBC when they show diapedesis. What is diapedesis? If you remember, diapedesis मतलब अगर ये skin है, if this is skin and the skin is being infected, the skin is being infected, bacteria infect कर गया skin में, और ये blood vessel है, this is blood vessel, and this is the long way that the WBC needs to reach up to the infected area. WBC इसके बीच में है, इसके अंदर है, and WBC को इतना long run लेना पड़ेगा infected area में पहुंचने के लिए. So WBC ये काम नहीं करेगा. WBC has got a different plan. क्या प्लान है उसका? WBC can squeeze themselves out. ये this is squamous epithelium of the blood vessel. Those squamous epithelium के बीच में the gap that is there, there's no gap basically. They are going to squeeze themselves out. WBC खुद को squeeze करके आ जाएगा infected area में to combat, to fight with that particular what? Bacteria. And that is what is called diapedesis. इस process को क्या कहेंगे? Diapedesis. Now tell me, यहाँ पे muscular movement हुआ है किसी का? The WBC has never shown any muscular movement. So this kind of movement is called non-muscular movement. We're going to talk about some of more examples in what is there in the NCERT. Yes. Phagocytosis. Yeah. Is an example of definitely, we can also get into that. We can also help the point called phagocytosis. Now the next one is internal body parts. So वो external body parts था. अब चले आओ internal body part में. So when we talk about internal body part, just now we have talked about external body part. Now what is internal body part? Internal body part में क्या क्या रहेगा? देखो, the first one is circulation of blood. Circulation of blood के लिए क्या चाहिए? Internal body part चाहिए. Circulation of blood के लिए, tell me the muscles which are associated for circulation of blood. Come on. What are these? Papillary muscles in the ventricles. Papillary muscles, find the muscles present inside the heart. That is going to help in what? The movement of the blood or the circulation of blood. Respiratory muscles. Respiratory muscles दो तरह के होते हैं. One is intercostal muscle. क्या नाम है? Intercostal muscle. And intercostal muscles, and the one is diaphragm. And the one is diaphragm. Diaphragm. So internal costal muscles and diaphragm. These are the two different types of muscles which helps in inhalation and exhalation. Though we know that this intercostal muscles are two different types. One is external intercostal muscle and the one is internal intercostal muscles. ठीक है? तो जब muscles के movement के बारे में हम बात करेंगे, we are going to talk about there are two types of muscles which helps in either helping your body part come close to your main axis, or some of the body parts is going to go away from your main axis. ठीक है? तो दोनों के लिए क्या चाहिए? दोनों के लिए क्या चाहिए? There is a muscles required. Say for example, there is a muscle over here, और आप चाहते हो ये muscle इस body part को आपके body के पास लाने के लिए. So this muscle needs to contract so that this body part is going to come close towards your body.
And there are some muscles present over here. This is going to help in contraction. अगर यहाँ पे contraction करेगा तो ये क्या करेगा? Open करेगा इसको. So think about it. So ये जो movement है, the movement is completely based on external body parts के बारे में कहेंगे. We will talk about the muscles. Next is what? Peristalsis of food. Peristalsis of food. Peristalsis of food. Yeah. Okay, peristalsis of food. What is that? Just hold on. Just hold on. Okay. Okay. Now. So, peristalsis of food. What is the meaning of this? Peristalsis मतलब क्या है आप जानते हो? Voluntary or involuntary muscles are required for that. जब खाना खाते हो आप, when you take the food in, food automatically जाता है या आप उसको push करते हो? Automatically जाता है, and that is by the help of what? The smooth muscles present over here inside your esophagus. Inside your esophagus, if you cut the section of the esophagus, ये digestive system तो आपके chapter नहीं है. So if you cut the section of the esophagus, there are four parts present. There are four parts. क्या है? Four parts. If you think about the esophagus lining, क्या है? What are the parts? This is your esophagus, okay? और ये आपका food, आपने यहाँ पे food लिया, और ये food को क्या किया जाएगा? What is going to happen is to this food will be pressed. Sign यहाँ पे इसके बाहर कुछ muscles हैं. It's going to press the food so that the food can come over here, and ultimately इसका destination कहाँ पे है? Stomach पे destination है. So when we talk about the transverse section of the gut or your esophagus, what we are going to see, the outermost covering. This is called what? This is called serosa layer. Made up of fibrous tissues. Fine. Then there's another layer which is called, what is the second one? The second one is called submuscularis layer. And the submuscular layer is having inner circular and outer longitudinal muscle. Inner circular and outer longitudinal muscles. दो तरह के muscles होते हैं. एक है inner circular, outer longitudinal muscles, and these two muscles are just opposite in action. We call them as antagonistic muscle. क्या कहते हैं उसको? Just like biceps and triceps. When you contract biceps, tricep is going to relax. When you contract tricep, bicep is going to relax. Fine. So this is called opposite muscles or antagonistic muscles. So inner circular muscles, when it is going to contract, outer longitudinal muscles, they are going to relax. And when they are going to contract, this one is going to relax. It's the opposite muscles. And then there is, what is the third layer? The third layer is called, what is the third layer? The third layer is called submucosa layer. क्या कहते हैं इसको? Submucosa. And the inner layer over here, the inner layer is called, the fourth one, called mucosa layer. So जो खाना आपने खाया, वो खाना ये भी इधर से आ रहा है, इसके टच में है, mucosal layer. Fine. So ये आपका food है. So food is directly in connection with the mucosal layer. Any issues with this? So there are four layers. When we talk it from outside to inwards, there are four layers. The outer layer is called serosa. क्या layer है? Serosa. The next layer is called submuscularis, which is having two particular inner circular, outer longitudinal. How to remember it? Inner circular, outer longitudinal. ICOL. Inner circular, outer longitudinal muscles. So it's present over here inside the gut. And this inner circular and outer longitudinal muscles are going to contract to push your food inside. And this is how, खाने के बाद, the moment you gulp it down, उसके बाद आपका उसके ऊपर कोई कंट्रोल है या नहीं है? नहीं है. It's a completely involuntary. This is called peristalsis, by which the food can move to every parts of your gut and ultimately come up to the
what? Anal sphincter, and from anal sphincter, even anal sphincter is also an involuntary in function. Yahan tak clear hai na? Huh? Yes. So this is what? So this is about peristalsis. This is about peristalsis. Okay? This is about peristalsis. Any issues about this? So there are 4 layers. ये chapter से निकल गया है आपका, ठीक है? That system is not there. So let us get into the next one. Now, so ये हो गया peristalsis of food. Next क्या है? Movement of genital tract and uterine wall. कौन help करेगा मुझे यहाँ पे? Movement of genital tract and uterine wall. बोलो uterine wall और genital tract. तो देख लेते हैं इसको. Movement. यहाँ पे देखो fallopian tube. I think all of you know. Class 10 तक आपने पढ़ लिया ये. This is fallopian tube. This is the uterus. This is the fallopian tube. Uterus. This is the fallopian tube. This is the finger-like projections called fimbriae. And this is the uterus. This is the vagina. So this is fimbriae, finger-like projections. This is ovary. This is ovary. This is ovary. Okay. Now this particular finger-like projections are called fimbriae. क्या कहते हैं इसको? Fimbriae कहते हैं. We call this fimbriae. The first part of the fallopian tube is called infundibulum. Infundibulum. The second part is called ampulla. The third part is called isthmus. The third part is called isthmus. And the fourth part is called uterine part. The fourth part is called uterine part or intramural part. क्या कहते हैं इसको? This part is also called as intramural part. Intramural. Mural. Fine. Intramural. M-U-R-L. Mural part. So these are 4 parts of the fallopian tube. Now all of you know, tell me the process. What is the structure? What is the structure? Come on. What is the structure? Graphian follicle. So ovary के अंदर क्या रहता है? Ovary के अंदर क्या रहता है? There are some follicles present, and these follicles gets developed by the help of follicle stimulating hormone. And in a single month, what happens? One of the follicle they develop into Graphian follicle by the help of which hormone? Follicle stimulating hormone. And follicle stimulating hormone are released from which part of the pituitary gland? Anterior, middle, or posterior? Any idea? They release from anterior part of the pituitary gland. And this follicle stimulating hormone is going to help the Graphian follicle to increase in size. Ultimately, they have got what? This is what? Ovum. This is secondary oocyte. Secondary oocyte, or you can call it as ovum, but ovum call करना ठीक नहीं रहेगा. Secondary oocyte. So ये क्या होता है? Normally you know that in a 28-day cycle, which we call it as a menstrual cycle, roughly 28-day cycle होता है. In the middle of that, on the 14th day on an average, what is the process which takes place? Who will tell me? What is the process which takes place? Durva, ovulation. What is that process called? Ovulation. Ovulation. So what is going to happen? This ovum, ये ovum क्या motile है, non-motile है? Can it move by itself? Can the ovum can move by itself? No. So it needs either a pull or a push. So this fimbriae, this finger-like projections, fimbriae, they have got some receptors. अगर इस हाथ को आप सोचो, इस उंगली को सोचो, अगर ये fimbriae है, they have got their own receptors over here. And ये ovary के अंदर, the moment the Graphian follicle is going to push, they start feeling something is happening. यहाँ पे कुछ cook हो रहा है. Something is happening. Fine. And the moment the Graphian follicle bursts, they can understand something is going to come out. So the moment secondary oocyte starts getting in, they suck it, called ovum aspiration. They suck it. So the ovum gets inside the what? The first part of the fallopian tube, which is called infundibulum. So ovum क्या हो गया? ये जो ovum है या secondary oocyte कह रहे हैं, ये कहाँ पे आ गया? ये कहाँ पे आ गया? Infundibulum में. Now inside this infundibulum there are some ciliated epithelium. क्या है? Ciliated epithelium. This cilia is going to push this particular secondary oocyte so that it can come over here in the ampulla region and wait over here for a sperm to come and fertilize it. So sperm यहाँ पे vagina में ejaculation हुआ यहाँ पे during coitus, and ultimately the sperm is going to try to move over here. So what is the fertilization site of human body? All of you know, it's ampulla or isthmus junction. Ampulla isthmus junction. Okay, तो यहाँ पे आकर ये sperm आकर इसको ovum को fertilize कर देगा. Now, sperm तो motile है, sperm can move by itself. But what about secondary oocyte or ovum? They cannot move by themselves. So they need push by cilia. So genital tract में, when we talk about the female reproductive system, there is a ciliary movement taking place where inside the fallopian tube. Inside this particular uterus, यहाँ पे भी क्या होता है? यहाँ पे भी movement होता है. यहाँ पे भी movement होता है किसका? यहाँ तक clear है? यहाँ तक clear है? Any issues about this?
सो जेनिटल ट्रैक्ट में भी क्या चाहिए? देयर इज अ मूवमेंट रिक्वायर्ड, देयर इज अ मूवमेंट रिक्वायर्ड. दिस यूट्रस, दे शो कंट्रैक्शन. They show contraction during coitus. This show contraction. When they contract, they further push this particular sperm so that they can move up to the ovum. यहाँ पे कौन वेट करते हैं उसको पकड़ने के लिए? WBC waits over here because for WBC sperm क्या है? Known या unknown है? Unknown है. Antigen. So they are going to start killing them, thinking that they are pathogens. Fine. So इससे उससे बचते बचते एक sperm जाकर एम्पुला में पहुंचा और आप एम्पुला में ओवम में जाकर उसको फर्टिलाइज किया, and then only we have been able to take birth. So that is very, very important. So movement of genital tract and uterine wall is also an example of internal body parts. यहाँ तक clear है? Any issues about this? So whatever we have talked about, Adrian, the first one is circulation of blood cannot take place without what? Internal body movement. वो किस में था? Heart का movement था. Heart make what is the muscle present? Papillary muscles. Then when we talk about respiratory muscles, intercostal muscles and diaphragm. The third one is peristalsis of food, where we have talked about inner circular, outer longitudinal muscles, and then movement of genital tract and uterine wall. So we have talked about that also. Now, non-muscular movement किस तरह के हो सकते हैं? Non-muscular movement, how many types of non-muscular movements can be present? See, the first one is ciliary movement. अभी आप just now we have talked about this, है ना? अभी बात किया इसके बारे में. Ciliary movement कहाँ पे है? Trachea में है, fallopian tube में है, paramecium. Paramecium, they have got cilia. आप जानते हो ना? We have talked about. ये ज्यादा मोटा हो गया बाबा. Okay, this is paramecium. What is the shape of it? Come on, slipper shaped. Unicellular eukaryote. Unicellular eukaryote. Durva, tell me. It comes under kingdom Protista. Very good. Unicellular eukaryote. They have got cilia. So by the help of cilia, they can help in movement. Also, they can help in grabbing the food. यहाँ पे हाँ. सो ट्रैकिया के अंदर क्या है? अगर ये ह्यूमन बॉडी है, अगर ये ह्यूमन है, फाइन, ये ह्यूमन है, अब ये है उसका ट्रैकिया. दिस इज द ट्रैकिया. नाउ इफ यू सी द ट्रैकिया इज हैविंग कार्टिलेज. इफ यू सी द ट्रैकिया इन अ मैग्निफाइड व्यू, सो ट्रैकिया में ये अगर ट्रैकिया है, द ट्रैकिया इज ऑल्सो हैविंग लाइनिंग ऑफ ciliated epithelium. So अगर यहाँ पे डस्ट पार्टिकल्स आप ले रहे हो along with the air, डस्ट पार्टिकल्स और भी नहीं जाएगा. The cilia वो डस्ट पार्टिकल्स को अंदर जाने देगा? आपको क्या लगता है? या उसको धक्का मारेगा ऊपर की तरफ? It is going to help the dust particles move like in this direction, in the direction where the buccal cavity is present. यहाँ पे धक्का देकर यहाँ पे लेके आएगा. तो यहाँ पे जब लेके आएगा तो ये जो मूवमेंट है इसको क्या कहते हैं? ये मूवमेंट को क्या बोलोगे? सिलियरी मूवमेंट है. सो और एंड आल्सो दे हैव गॉट सम म्यूकस लाइनिंग. सो दे आर गोइंग टू ट्रैप होल्ड ऑफ दैट डस्ट पार्टिकल्स. आप चाहते हो कि वो डस्ट पार्टिकल जाकर एल्वियोली तक पहुंच जाए और एल्वियोली में एक लेयर बना दे और आपका एक्सचेंज ऑफ गैस का काम नष्ट कर दे? नो, यू नेवर वांट दैट. Clear? So in that case, this is what is the function of ciliary movement inside the trachea. And who is going to tell me if this guy is having this, smokes the cigarette? Tell me what is going to happen. This particular nicotine can destroy the cilia. And what is going to happen? The person who smokes is a regular smoker. उनमें क्या होगा? डस्ट पार्टिकल्स पकड़ पाएंगे या चले जाएगा वो एल्वियोली में? Tell me what is the syndrome called? If you know that, you're going to study in your medical colleges. Carter-Jenner syndrome. क्या कहते हैं इसको? Carter-Jenner syndrome. Carter-Jenner syndrome. क्या होता है यहाँ पे? In Carter-Jenner syndrome, what happens? This particular movement of the cilia, it dies down. ये नष्ट हो जाता है. And this movement जो ऊपर की तरफ वो धक्का देता है, that particular movement is called escalator action of cilia. क्या कहते हैं? Escalator action of cilia. Is this clear? What is going to happen to the escalator action? I think you know what is called escalator action. किधर जानिस तो चलो मान सीढ़ी दावाली उठेगा लो. So अगर आप खड़े होते हो तो वो सीढ़ी चला जाता है ऑटोमेटिकली. So ये डस्ट पार्टिकल्स यहाँ पे है, ऑटोमेटिकली कहाँ पे देगा? कुछ देर बाद यहाँ पे देखेगा खुद को, अरे मैं तो यहाँ से चला गया था, और यहाँ से कैसे आ गया? एक सीलिया दूसरी सीलिया कैसे मारते तो ऊपर तक लेके आया dust particles को. What is going to happen to this particular smoker? Carter-Jenner syndrome. They are going to suffer from Carter-Jenner syndrome.
और उनमें क्या होगा, द डस्ट पार्टिकल्स विल गो स्ट्रेट अवे टू द एल्वियोली। ठीक है, ओके चलो। सो ये था fallopian tube, we have talked about trachea का बारे में बात कर लिया अभी, and paramecium you already know about the ciliary movement. So this is what kind of movement? This is movement of muscular or non-muscular? Very good. Come down to flagellar movement. आप flagella जानते हो, यूग्लिना में flagella है, you know what is यूग्लिना? Fine. I don't think मुझे बोलना है आपको, आप जानते हो यूग्लिना ये है, they have got a long flagella, they have a long flagella. दुर्बा, only they have got a long flagella, also they have got a short flagella. बोलो बोलो बोलो. They also have got a short flagella. What is the function of short flagella in euglena? They have got light receptors. They have got light receptors. और since light receptors वो कहाँ पे जाते हैं? They help the particular euglena move towards the light to make food because they are having chloroplast. They have got chloroplast. They have got. अरे समझ में? So अपना food वो अपना खाना बना सकते हैं. But are they complete autotrophs? Are they going to tell me? Are they complete autotrophs? नहीं, जब there is a scarcity of food, फूड का अभाव हो गया, they will start behaving like heterotrophs. ठीक है, समझ में आ गया? चलो, so ये है, ये what is choanocyte cells? Come on, tell me, choanocyte cells कहाँ पे present था? Animal Kingdom chapter में choanocyte cells are present in the sponges, in the sponges. Fine, remember they have got a pore. What is that pore called? The upper part. भूल गए? हाँ? Choanocyte cells. चलो दिखा देते हैं. Choanocyte cells. Choanocyte cells. What is choanocyte cells? Come on. Yes. काम ही तो है ना, जितना सर आप आगे जाएंगे हम उतना पीछे वाला भूलते जाएंगे सर, यही तो मैकेनिज्म है ना? ये रहा आपके सामने नन्ना मुन्ना सा स्पॉन्ज. ठीक है, दिस इज साइकॉन. दिस इज साइकॉन. नाउ व्हाट आर दीज? दीज आर ऑस्टिया. एंड व्हाट इज दिस लार्ज mouth called osculum? So water gets inside through ostia, goes out through osculum. What is this called? Water canal system. What is this called? Exclusively shown by sponges. That is all poriferans. Now think about it. Now when water gets inside through this particular ostia, encircling the ostia, कौन है? Encircling the ostia, कौन है? Collar cells है. Collar cells. And they have got cilia. They have got cilia like. समझ में आया क्या? अगर ये कॉलर सेल है, उसमें ऐसे ऐसे सीलिया है, ऐसे सीलिया है. सो सीलिया से क्या करेंगे? जो फूड, पानी के साथ जो फूड जा रहा है उसको पकड़ लेंगे. सो दे हेल्प इन ट्रैपिंग ऑफ फूड. दे हेल्प इन choanocyte cells. What is the name of the cell? Choanocyte cells. What is the other term for that? Collar cells. हो गया? So this is the present in the choanocyte cells. Trypanosoma, leishmania. अब बोलो trypanosoma में long flagella है. Trypanosoma, it helps in trypanosoma gambians. It helps in making a disease. Tell me the disease. It causes a disease. What is that disease called? Very good. African sleeping sickness. What is the disease called? African sleeping sickness. African sleeping sickness. Very good. African sleeping sickness. African sleeping sickness. So trypanosoma gambians, it makes what? African sleeping sickness. It creates what? African sleeping sickness. It creates African sleeping sickness. African sleeping sickness. African sleeping sickness. Fine. Tell me. African sleeping sickness. Who is the vector? Jaldi se. Who is the vector? It is CC fly. CC fly. Come on. CC fly. TSC. T silent. CC fly. And tell me the scientific name of TC fly. Glossina palpalis. क्या नाम है? Glossina palpalis. दुर्बा जानती तो? हाँ? Yeah, good. It's very important. African sleeping sickness. And tell me, leishmania. I think now you can remember this. Leishmania donavani. अच्छा, कहाँ पे पढ़े थे हम? कुछ पढ़े चिला मामला था. Leishmania donavani कहाँ पे पढ़े थे? Tell me the topic where we have studied this. Come on. Bio classification under kingdom Protista, under sporozoa. No. Sporozoa में क्या था? Only plasmodium. So ये वहीं पे हम we have talked about Leishmania donavani. Leishmania donavani, they have got flagella. So they are called flagellated protozoa. They are called
flagellated protozoa. So under flagellated protozoa, we have talked about two examples, Leishmania donovani and Trypanosoma gambians. Leishmania donovani can make a disease called Kala-Azar. Called Kala-Azar. And tell me the vector. Tell me the vector. The vector is sandfly. The vector is sandfly. Sandvenomous sandfly is Phlebotomus. Phlebotomus. Clear? Scientific name of the vector sandfly is Phlebotomus. Let's come down to the third type called pseudopodial movement. Example, WBC. अभी बोले थे आपको diapedesis. We have talked about now. Diapedesis. Amoeba. Pseudopodia. Clear? So they show what kind of movement? Pseudopodial. Muscular and non-muscular. Arjit? Non-muscular. Cytoplasmic streaming. Both important content. Star mark for NEET examination. Fine. Cytoplasmic streaming or cyclosis. कहाँ पे देखेगा? कहाँ पे देखा जाएगा? यूकैरियोट्स में. What is cyclosis? एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में किस तरह से अगर साइटोप्लाज्म में मूवमेंट होगा, if there is a streaming inside the cytoplasm, we call it cytoplasmic streaming, and बाहर मेम्ब्रेन है और जहां पे धक्का लगेगा मेम्ब्रेन में वहां से क्या हो जाएगा? आप बैलून को पकड़ के जब छोटे थे, बैलून को पकड़ के ऐसे आप प्रेशर करते थे तो आपके उंगली के बीच से यहां से आ जाता था. कहां से? उंगली के बीच से. क्यों? क्योंकि यहां पे प्रेशर हो रहा है और यहां पे क्या है, उसमें क्या हवा में आप प्रेशर दे रहे हो और जहां पे वो बैलून में फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा है वहां से वो क्या होगा? पॉप करेगा. सो थिंक अबाउट इट. अंदर जब cytoplasm है, when the cytoplasm starts moving, it gives a pressure on the cell membrane. Cell membrane is going to come out, protrude out, and making what? A structure called pseudopodia. इसी pseudopodia से वो क्या करेंगे? मूव करेंगे. कौन? This kind of eukaryotes. समझ में आया क्या? हाँ? क्या ऐसा करते हो ना होली में? করিস না বেলুনের মধ্যে জল ভরে কি করিস? এই যদি নিজে মাটিতে ফেলে দিস ও মুভ করবে কোন দিকে? যেদিকে জল মুভ করছে. কনসিডার বেলুনের উপরের মেমব্রেনটা, that particular elastic, fine, is what? Is flexible, and that's why জল যখন যেদিকে মুভ করবে সেই দিকে ও মুভ করতে যাবে, and that is called cytoplasmic streaming in eukaryotes. So these are the four different types of non-muscular movements. So the first one is ciliary, flagellar, pseudopodial, and cytoplasmic streaming. Any issues with this? Come on. Go. Yes? Sure. Next. Locomotory organs occurs by running. Locomotion occurs by running, walking, creeping, crawling, hopping, flying, swimming. Creeping तो आप जानते हो, creepers जानते हो ना, ऐसा भूत का मूवी देख लिया, बहुत सारे घोस्ट का मूवी देख लिया. हाँ? डर कितने तरह के होते हैं. किसी भूत को आप क्रीप करा दो, हो गया तो ना पागल हो जाओगे आप. सीढ़ी से उतरना कभी देयर इज अ प्रोसेस. सीढ़ी से उतरना, ऐसे उतर आओ ना, दोनों पैर से नहीं, उसको उल्टा आना है. सीढ़ी से उल्टा आना है. उसको पूछो हाउ यू आर डूइंग इट. आप लोकोमोशन मूवमेंट चैप्टर पढ़े थे, पूछो भूत को, कंफ्यूज हो जाएगा भूत. अरे ये क्या है? क्रीपिंग भी is also done by this. So crawling, hopping, flying, swimming is all done by what? Locomotory organs. In invertebrates and in vertebrates. Vertebrates में किस तरह से होगा? By the help of what is the meaning of skeletal muscles? The muscles which are present on the over the bones. So skeletal muscles are those muscles which are in contact with the bones. So if you can, and those muscles are called skeletal muscles. Fine. In case of invertebrates, example, Coelenterata में देखो, in Coelenterata, they call epitheliomuscular cells. क्या नाम है? Epitheliomuscular cells. Annelida, they have got parapodia and setae. I think you know that. Setae, huh? In plural क्या है? Seta. In case of annelids, that is in case of parapodia कहाँ पे मिला था हमें? Tell me the parapodia. Seta in case of earthworm, Ferretima postuma. And what about parapodia? आपके बुक में वो वाला फिगर नीचे वाला, Nereis. They have got parapodia. अच्छा, arthropoda, jointed appendages, they have got jointed appendages. Mollusca, they have got muscular foot. Echinodermata, they have got tube feet. I think you know that these are the locomotory organs in case of some invertebrates. And for vertebrates, what is it? It is skeletal muscles. यहाँ तक clear है? Any issues about this? Vishal, what is your locomotory organ? Legs. Good. Congratulations. सबका legs है? चलो ठीक है.
So you are there. Types of muscles. Types of muscles. Muscles कितने के होते हैं? How many types of muscles are there? There are 3 types of muscles. Very very important. This difference is very important. ऐसा नहीं है कि पहली बार सुन रहे हो आप. It's not like first time you are hearing all this. So you have, you know. So but the main thing is that you have to understand the difference between these 3. Clear? The first one, skeletal muscle. क्या नाम है? Skeletal muscle. Second one, non-skeletal. Third one, non-skeletal but involuntary. Normally क्या होता है? Non-skeletal involuntary है. Sorry, non-skeletal but striated and striped. अच्छा पहले देख लो. Skeletal muscles are those muscles. अगर ये आपका हड्डी है, fine, and this muscles, ये biceps है आपका, तो biceps are connected with a bone. This is called skeletal muscles. Voluntary या involuntary है, आपके movement आपके control पे है. Striated. What is the meaning of striations? So they have got some striations. Cross striations like this. There were some cross striations. What are striped in the muscles we are going to talk about? They are going to have some stripes like this. So they are called striped muscles. Example: biceps and triceps. Biceps and triceps. This is one of the examples. There are many of them. Now, non-skeletal muscles. Opposite. The second one is non-skeletal. Those muscles which are not attached with the bones. Okay. Example: Durba. All visceral organs. All visceral organs, all the organs which are present in your alimentary canal, all the organs present inside your alimentary canal. Adrian, tell me, intestine क्या होगा? Intestine हड्डी है, intestine में नहीं है, so क्या होगा वो intestine? Intestine में movement होता है, peristalsis होता है, हाँ होता है सर. क्या कहेंगे इसको? Non-skeletal. Very good. Non-striped है, there's no stripes, non-striated, no striped. इसलिए इसका और एक नाम बढ़ गया. What is that? Smooth. So they also called smooth muscles. So इसके 5 नाम है. Non-skeletal, involuntary, non-striated, non-striped, and smooth muscles. Example: all visceral organs, all the muscles present inside our alimentary canal. यहाँ तक clear है? Any issues with this? Third type is non-skeletal. हड्डी नहीं है. Involuntary. वो तो जानते हैं हड्डी नहीं होता तो involuntary होता है. पर ये धक्का वाला बात था. They are striated. That means third type of muscle is having some of the character of these and this. दोनों muscles के दोनों type के कुछ important points, कुछ combinations यहाँ पे है. Very very important. We are going to talk about what? Cardiac muscles. Heart muscles are the third type of muscles, which are heart muscles. Any issues with this? Come on. 3 types of muscles समझ में आ गया. So a difference देखना है. We need to understand about the difference about this. Pure NCERT में नहीं है ये. Pure NCERT में नहीं है. थोड़ा देख लो. You need to understand this. Skeletal muscles का structure कैसा है? The structure of them is cylindrical. देखो ये cylindrical है. Cylindrical है, देखो ये रहा मसल, cylindrical muscles है. और इसमें देखो न्यूक्लियस है. न्यूक्लियस कहाँ पे रहते हैं? न्यूक्लियस पेरिफेरल न्यूक्लियस में रहते हैं. न्यूक्लियस रहते हैं पेरिफेरी में. Fine. So nucleus are present like over here in the periphery. Nucleus peripheral region में रहते हैं. So this is the nucleus present over here in the muscles. अगर ये muscle cell है, so the nucleus are the multinucleated conditions. क्या क्या है? ये एक सेल है. This is one muscle cell where they have got more than one nucleus. अगर more than one nucleus है उसको क्या कहेंगे? Syncytium. क्या कहेंगे उसको? I think ये next point में मिलेगा. Syncytium. Syncytium. ये skeletal muscles का एक characteristics है. Fine. So you can see these are muscles. These are nucleus. These are nucleus. So they are cylindrical. They have got striations. Single long cylindrical with multinucleate cells. मल्टीन्यूक्लियर कंडीशंस का क्या नाम है और एक नाम क्या है? सिंसाइशियम. क्या है? सिंसाइशियम. ठीक है. ओके. व्हेन वी टॉक अबाउट स्मूथ मसल्स, देखने में कैसा है? दोनों साइड में टैपरिंग एंड्स है. किरे ये आ जाएगा ना, दोनों साइड में चिपकेगा ये देखो चिपकेगा. सो दे हैव गॉट टैपरिंग एंड्स एंड दिस इज स्मूथ मसल्स. दे हैव गॉट सिंगल यूनिन्यूक्लिएट. देखो एक ही न्यूक्लियस है. फ्यूजिफॉर्म स्पिंडल शेपेड विद नो स्ट्राइशंस. कोई स्ट्राइशंस नहीं है. दे डोंट हैव एनी स्ट्राइशंस. विशाल, इज दिस क्लियर? What is fusiform? Fusiform. We got this term where? In fusiform roots. Fasciculated. Fusiform. Fusiform. Where fusiform. Fusiform. कहाँ पे मिला आपको ये term? Uninucleate fusiform. Okay. Uninucleate fusiform. The shape of the spindle shaped is to some extent is called as fusiform type. I thought you are talking about fasciculated roots. Okay, this is called no striations. They have got no striations. What is this? Cardiac muscles, they are attached to the heart muscles. They are attached to the heart muscles. And see what is the difference between this? They are also cylindrical, but they are branched or unbranched?
branch. What about this? They are unbranched. That's the difference. In case of skeletal muscles, क्या है? They are unbranched. They don't have any branches, but they do have some branches. Now, branching chain of cells, uni or binucleate, uni or binucleate, uninucleate or binucleate, with striations. देखो striations है बीच में. Can you see the striations? So these are striations. Any issues with this? Come on. समझ में आया? ये difference समझ में आया? अरिजीत, is this clear? विशाल, clear है? चलो. Next. Very very important. Though इसको समझना है हमें. We need to understand about this. Now देखो skeletal muscles में they are अच्छा before we get into this थोड़ा समझ लो हाँ. अच्छा ये समझ में नहीं आ रहा आपको what is the structure is all about. अच्छा थोड़ा यहाँ पे समझा देते हैं आपको. ये अगर मसल है आपका बाइसेप्स है. ये क्या है? बाइसेप्स है. What is this? This is bicep. This is bicep. Okay. अब ये बाइसेप में ये मसल है. This is muscle. The external part of this muscle is called epimysium. क्या कहते हैं इसको? Epimysium. It's called epimysium. This is called epimysium. Okay. So हो गया. चलो. Okay. What is that? Epimysium. क्या है? एक्सटर्नल पार्ट. मसल्स के बाहर का मेम्ब्रेन का नाम क्या है? एपीमाइसियम. ओके. नाउ ये होल बाइसेप्स को आप निकालना है. सो यू हैव टेकन आउट द होल मसल. और होल मसल के बाहर क्या होगा? एपीमाइसियम होगा. अब इफ यू कट द सेक्शन ऑफ द मसल और ऐसे देखो उसके अंदर क्रॉस सेक्शन के अंदर. सो व्हाट यू गोइंग टू सी? यू आर गोइंग टू सी सम मसल व्हाट? बंडल्स. मसल बंडल्स. And उस मसल बंडल को क्या कहते हैं? The other term for the muscle bundles are called fasciculars or fascia. क्या कहते हैं उसको? Fascia. So muscle bundle में, so what is most important in the muscle bundle? The outer layer of the muscle bundle is called perimysium. क्या कहते हैं उसको? Perimysium. उसके बाद क्या आएगा? Muscle fiber. क्या आएगा नाम? Muscle fiber. In muscle fiber का बाहर का मेम्ब्रेन का नाम क्या है? एंडोमाइसियम. व्हाट इज द अदर टर्म? एंडोमाइसियम. क्या नाम है? एंडोमाइसियम. व्हाट इज द अदर टर्म कॉल्ड? एंडोमाइसियम. जस्ट वेट फॉर अ सेकंड. यस, एंडोमाइसियम. सो क्या कहना आया? एपीमाइसियम. देन एपीमाइसियम के बाद पेरीमाइसियम. एपीमाइसियम के बाद पेरीमाइसियम. एपीमाइसियम कहां पे है? आउटरमोस्ट कवरिंग ऑफ द मसल सेल. मेड अप ऑफ एपीमाइसियम मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. एपीमाइसियम मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. देन पेरीमाइसियम. क्या नाम है? पेरीमाइसियम. उसके बाद एंडोमाइसियम. क्या नाम है? एंडोमाइसियम. Endomysium. I will tell you that. What is that? Yes. देखो ये मसल सेल है. This is muscle cell. Yes. देखो यहां पे आपका हड्डी है. This is your bone and this is your biceps. अब बोन के साथ बोलो muscles. Bone connected with muscle. What is there in between? We have done it already in the chapter structural organizations in animals. So what are tendon? Tendon का function क्या है? Tendon connects bone to a muscle. So this bicep is connected with the bone by the help of tendon. So ये structure का नाम क्या है? Tendon. So tendon connects bone to muscle. BTM. How to remember it? BTM. Now ये muscle है. एकदम muscle का. ये बाहर का मेम्ब्रेन क्या है? Epimysium. Inside this muscles you can see structures like this. देखो स्ट्रक्चर देखो थोड़ा व्हाइट में दिखाते हैं इसको. ये देखो स्ट्रक्चर. ये एक स्ट्रक्चर के अंदर भी कुछ स्ट्रक्चर्स हैं. बट ये जो बड़ा स्ट्रक्चर है उसको अगर बड़ा करके दिखते हैं. इफ यू टेक दिस वन स्ट्रक्चर आउट, क्या देखेंगे? अच्छा ये एपीमाइसियम है. तो यहां का स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रक्चर है वो है पेरीमाइसियम. क्या नाम है? पेरीमाइसियम. तो पहले क्या है? व्हाट इज द बिगर स्ट्रक्चर? द बिगर स्ट्रक्चर इज मसल. उससे छोटा स्ट्रक्चर का नाम क्या है?
अच्छा, मसल के बाहर का मेम्ब्रेन का नाम क्या होगा? वेरी गुड, एपिमाइसियम। एपिमाइसियम। उससे छोटा स्ट्रक्चर उसके अंदर क्या रहेगा? मसल बंडल। मसल बंडल। बंडल, ये मसल बंडल। मसल बंडल और अदरवाइज कॉल्ड एज फैसिया। क्या कहते हैं? फैसिया। इसके बाहर का मेम्ब्रेन का नाम क्या है? व्हाट इज आउटर कवरिंग कॉल्ड? पेरीमाइसियम। वेरी गुड, पेरीमाइसियम। पेरीमाइसियम। एंड देन देयर इज अनदर, इससे भी छोटा स्ट्रक्चर, क्या नाम है इसके बाहर से? समझा रहे? दिस इज अ बिगर स्ट्रक्चर, उसके अंदर मसल बंडल, उसके अंदर व्हाट इज द स्ट्रक्चर? मसल फाइबर। क्या नाम है इसका? मसल फाइबर। मसल फाइबर। अब बोलो मसल फाइबर में क्या रहेगा? मसल फाइबर में क्या रहेगा? व्हाट इज आउटर कवरिंग ऑफ द मसल फाइबर कॉल्ड? व्हाट इज दिस कॉल्ड? पेरीमेसियम। उसके ऊपर जाइए तो क्या होगा? एंडोमाइसियम। और यही एंडोमाइसियम यहां पे दिखाई दिया, देखो एंडोमाइसियम। एंडोमाइसियम के बाद, एंडोमाइसियम के बाद दिस अनदर स्ट्रक्चर व्हिच कम्स आउट। और ये कहां पे है? दिस ऑल लाइक दिस। समझ में आ रहा है क्या? ये आर यू गेटिंग मी? सो यहां से निकल रहा है। गॉट द आइडिया? एक्टर भीतर आ रहा है, एक्टर भीतर आता है, एक के अंदर और एक, एक के अंदर और एक। ये क्या है? व्हाट इज दिस? दिस इज मायोफाइब्रिल। क्या नाम है इसका? मायोफाइब्रिल। दिस इज मायोफाइब्रिल। दिस इज मायोफाइब्रिल। उसके अंदर भी अब छोटा सा है, बोलो बहुत सारे। टेल मी व्हाट इज दैट स्ट्रक्चर कॉल्ड? मायोफिलामेंट। क्या नाम है? मायोफिलामेंट। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? दिस यू नीड टू अंडरस्टैंड। यही स्ट्रक्चर आपके बुक में एनसीईआरटी में देख सकते हो। दे हैव गिवन अ क्रॉस सेक्शन ऑफ द मसल सेल एंड हेल्प यू अंडरस्टैंड अबाउट दैट। यस, दैट इज द स्ट्रक्चर। ठीक है, बुक निकालो थोड़ा सा, देख लो ये वाला स्ट्रक्चर। यस, ओल्ड बुक 304, यू कैन सी एकदम बाहर। यस, दैट इज अ मसल फैसिकल। देखो, फैसिया और फैसिकल मसल बंडल। उसके अंदर क्या है? उसके अंदर मसल फाइबर है। मसल फाइबर के अंदर मायोफाइब्रिल, मायोफाइब्रिल के अंदर मायोफिलामेंट। एंड दिस मायोफिलामेंट्स आर ऑफ टू मेन टाइप्स। व्हाट आर दे? दोस एक्टिन एंड मायोसिन। मायोफिलामेंट कितने तरह के होते हैं? Myofilaments are of two types, actin and myosin. Actin and myosin are what? They are proteins. They are called contractile protein. They are called contractile protein. So बाद में पढ़ेंगे और भी कुछ proteins हैं, like just like troponin and tropomyosin. We're going to talk about that. But this structure is okay. This structure is okay with you. So कौन सा सेल है? एंडोमाइसियम के अंदर वो कौन सा सेल है? मसल सेल. What is the other term for muscle cell? Myofilament. Myofilament? No. Myofibril. Myofibril. Any issues with this? यहां तक क्लियर है बाबा? चलो। सो स्केलेटल मसल में एपिमाइसियम है, पेरीमाइसियम, एंडोमाइसियम प्रेजेंट, तीनों है। इन स्केलेटल मसल्स three layers are present. What about smooth muscles? Only endomysium present. Very, very important point. So in skeletal muscles there are three different types of layers present. ये तीनों लेयर किससे बना है? Adrian, tell me. Epimysium, perimysium, endomysium किससे बना है? Connective tissue. Very good. Very good. Now, in smooth muscles they have got only endomysium. In cardiac muscles they have got endomysium attached to fibrous skeleton of heart. Endomysium सिर्फ कहां पे attached है? Fibrous skeleton of the heart muscles. Fibrous skeleton of the heart muscles. बोलो समझ में आया क्या? Skeletal muscles में क्या रहते हैं? What are present in skeletal muscles? अब देखो यहां पे एक टर्म दिया गया है, that is called T-tubule. So जब हम ड्रॉ करेंगे, the moment we are going to draw a muscle cell, अगर ये muscle cell दिखाएंगे तो ऐसा आपको एक स्ट्रक्चर मिलेगा. This is the structure you are going to get. Fine. You can see some invagination inside the cells. और यहां पे कुछ protrusion है and the protrusion is having peripheral what? क्या है लग रहा है ये? What is this present? Nucleus. What are these? Nucleus. ये क्या है? Nucleus है. I am making what? This is a muscle cell. This is a muscle cell. अब muscle cell में can you see the structure which invaginates inside? अच्छा, बाहर का मेम्ब्रेन का नाम क्या होगा? Muscle cell के बाहर का मेम्ब्रेन का नाम क्या होगा? सार्कोलेमा. क्या नाम होगा? सार्कोलेमा. लेमा मतलब मेम्ब्रेन. अच्छा, सार्को टर्म क्यों आया सर? Where from the term sarco has come? दुर्गा, सार्को. Study of muscle is called. Study of muscle is called sarcology. Very good. Study of muscle is called sarcology. Study of muscle is called sarcology. What is the other term for muscles? Just now I have talked about myofibril. Myo term कहां से आया? Muscle. So myofibril, myology.
Study of muscle is called myology. Study of muscle is called myology. Okay? Yes. Yes. Okay. Study of muscle is called myology. So myofibril is myofibril term कहां से आया? From myology only. So sarco has come from the term sarcology. Sarcology. The study of muscle is called sarcology. Okay. Now sarcolemma. और ये जो structure है इन्वेजिनेट किया अंदर. What is this called? T-tubule. What is this called? T-tubule. What is the meaning of the term T? Any wild guess? T मतलब क्या है? Transverse. So transverse tubules. So this is transverse tubule. Fine. Now इसके अंदर क्या रहेगा? What is present inside? There is sarcoplasmic reticulum present, and this is called SER. क्या नाम है? Smooth endoplasmic reticulum, which contains what? Calcium ion. Which contains calcium ion. Which contains calcium ion. So what we have to call them as sarcoplasmic reticulum. Endoplasmic reticulum inside muscle cell is called sarcoplasmic रेडिकुलम. क्या कहेंगे इसको? सार्कोप्लाज्मिक रेडिकुलम. यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है बाबू? वेरी गुड. नाउ माइंड यू वन थिंग, दे आर द मेन स्टोरेज हाउस ऑफ कैल्शियम आयन. और याद रहे मसल मतलब हम क्या पढ़ेंगे? व्हाट वी विल स्टडी अंडर मसल इज मसल कंट्रैक्शन. और मसल कंट्रैक्शन ये क्या जरूरी है? व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर मसल कंट्रैक्शन? कैल्शियम. फाइन. ओके. मसल कंट्रैक्शन के लिए कैल्शियम चाहिए. कैल्शियम और कहां पे है? For your bone health, muscles is required. For your bone health, calcium is required. For your teeth, calcium is required. पर अगर ज्यादा कैल्शियम लोगे तो क्या होगा? What is going to happen? There will be deposition of calcium oxalate inside your kidney or inside your gallbladder. What is the condition called? Gallbladder stone. Fine. So you cannot pop up more of calcium, man. More of calcium. Clear? Too much of calcium is not required for your body. It's going to be harmful for your body. So मसल कंट्रैक्शन के लिए क्या चाहिए? कैल्शियम चाहिए. और कैल्शियम कहां पे रहेगा? What is the source of calcium? Sarcoplasmic reticulum is the source of calcium. Any issues with this? Yes, ये क्या है? T-tubule कहते हैं. So T-tubules are present in the skeletal muscles. Two in each sarcomere between A and I band. What is A and I band? अभी आपको दिखाएंगे. What is A and I band? I'm going to just show it off. No issues. Just wait. देखो यहाँ पे. Myofibril के बारे में बात कर रहे थे आपसे. Just now I was talking about myofibril. Understand this. ये है that myofibril. Okay, चलो ये. And in this myofibril, what we can see is there is a bigger filament called myosin. क्या है यहाँ पे? Bigger filament like myosin. ये क्या है? This is myosin. myosin. What is myosin? It's a contractile protein. And this you can see it's thick. But what you can see a thin filament called actin. A thin filament called actin. ये देखो thin filament है actin. आपकी बुक में थोड़ा सा डायग्राम डिफरेंस है. Fine. So this is actin filament, which is called thin filament. What is this? This is actin. And this is thin filament. क्या है ये? Thin filament है. Thin filament. And this myosin is a thick filament. Now, in between these two, what you can see, यहाँ से, what you can see a particular line called Z line. क्या नाम है? Z line. इसका और एक नाम क्या है? Line of cross line, KRAUSE. So again, between the actin filament, you can see another line over here, which we call as Z line. क्या कहते हैं इसको? Z line. Any issues? Now, within this, ये जो myosin filament, जहां पे thick filament है, if you just consider this particular part, जहां तक myosin filament है, this is called A band or anisotropic band. क्या कहते हैं इसको? Anisotropic band. इसको लार्ज स्केल में देखो तो क्या मिलेगा? यहाँ पे मिलेगा डार्क बैंड, और जहां पे ये थिन फिलामेंट है, यहाँ पे क्या मिलेगा?
लाइट बैंड। तो अगर इसको छोटा करके दिखाएं तो कहीं पे डार्क, कहीं पे डार्क, कहीं पे डार्क और कहीं पे लाइट, कहीं पे लाइट, कहीं पे लाइट। अब अगेन कहीं पे लाइट, कहीं पे लाइट, अगेन कहीं पे डार्क। गॉट द पॉइंट? समझ में आ गया? ये डार्क बैंड, लाइट बैंड, ये दोनों क्या बना रहे हैं? स्ट्राइप्स बना रहे हैं नहीं है? फिर इसमें मेक स्ट्राइप्स। Now in between this light band you can see a line. What is the line called? Z line. The gap between two Z line, दोनों Z line के बीच के गैप को क्या कहेंगे? सार्कोमियर। क्या कहेंगे? सार्कोमियर is very, very important. This is a unit of muscle contraction. Sarcomere is a unit of muscle contraction. It is a gap between two Z line. What is the alternative for Z line? Cross line. Clear? अब देखो यहां पे एक्टिन फिलामेंट है, यहां पे एक्टिन फिलामेंट है। जहां तक एक्टिन फिलामेंट है तब this is this particular structure where the actin filament is present, we call it as I band. We call it as I band. ये भी क्या है? I band. So what is I stands for? I stands for isotropic band. I stands for isotropic band. So अब दो Z line के बीच में क्या मिलेगा आपको? Half of I band मिलेगा, full of A band मिलेगा and half of I band मिलेगा. So what is sarcomere? Sarcomere is equal to half of I band, Vishal tell me, then full of myosin length. What is that? A band plus again half of this half. It's called half of I band. Half of I band. So this is what is sarcomere. This is what is sarcomere. Now during contraction, ये जो myosin है, myosin is having some head-like structure which connects itself with the actin. मायोसिन का ऐसा हेड एक्टिन के साथ ऐसे लगे हुए रहते हैं एंड दे पुल दीज टू स्ट्रक्चर्स क्लोज टुगेदर। तो जब पुल करेंगे व्हाट इज गोइंग टू हैपन टू द जेड लाइन गैप? द गैप इज गोइंग टू रिड्यूस। तो मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो मसल क्या होगा? मसल का साइज क्या होगा? रिड्यूस होगा। क्यों? क्या हो गया? देयर हैज बीन सम स्लाइडिंग व्हिच हैज ऑकर्ड, स्लाइडिंग बिटवीन एक्टिन एंड मायोसिन, between actin and myosin. So yahan se from myosin there will be some head like structure which is going to attach with what? With actin. और ये जो दो actin filament के बीच में gap है, you can see the gap. This gap is called what? कौन बोलेगा? What is this gap called? This gap is called H zone. This gap is called H zone. So जब ये दोनों ये सोचो ये है myosin filament और यहां पे है एक्टिन, यहां पे है एक्टिन। ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन ये दोनों पास पास आ जाएंगे, दोनों के बीच के गैप को क्या कहते हैं? एज जोन। व्हेन दे आर गोइंग टू कम क्लोज टुगेदर व्हाट इज गोइंग टू हैपन टू द एज जोन? द एज जोन इज गोइंग टू गेट रिड्यूस्ड। द गैप बिटवीन द एज जोन इज गोइंग टू गेट रिड्यूस्ड। गैप कमबे ना बढ़बे? कमबे। टेल मी द गैप इन टू जेड लाइन इज गोइंग टू डिक्रीज और इंक्रीज? Decrease. The sarcomere gap, come on, the sarcomere, yahan pe the gap in 2Z line is going to decrease. And there is a line over here. What is that line called? M line. M line, otherwise called as Dobbe's line. D-O-B-I-S, Dobbe's line. What is going to happen to the middle one? No change is going to occur with the M line. So in your book you can see, muscle jab relax ho raha hai, you can see the gap. When in a contracted state, you can see the gap has been decreased. Page number 308. In old book you can see the relaxed, during relaxed condition you can see the H zone gap, and if you see in the contracted state H zone ka gap kya ho gaya? Reduce ho gaya. And what has also happened? The sarcomere length has been reduced. Can you see the sarcomere length has been reduced? Second figure. Good. Second figure. And the last one is maximally contracted. Maximally contracted mein dekho, you cannot see the gap, you cannot see the H zone, you cannot see the H zone. Is this clear? इसको कहते हैं muscle contraction. इसको कहते हैं muscle contraction. So muscle contraction कैसे होता है? We will talk about this whole myofilament. We will talk about, हम अलग से पढ़ेंगे myosin का structure क्या है, actin किससे बना है, myosin किससे बना है. We are going to talk about that. But is this basic idea clear? तो ये जो head बनाया, head तो बनाया, touch किया actin को. It wants to pull in this direction and ये इस तरफ pull करेगा. During pulling, energy चाहिए नहीं चाहिए? ATP is required or not required? Required. इसलिए muscle contraction के लिए आपको ATP चाहिए नहीं चाहिए? चाहिए. Any issues with this? Tell me
अभी बोल रहे थे आपको कैल्शियम इज रिक्वायर्ड फॉर मसल कंट्रैक्शन. कैन यू टेल मी कैल्शियम और कहां पे मिला हमें कैल्शियम का रिक्वायरमेंट? जितना ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ लिया आप, टेल मी other areas where the calcium is required. Blood clotting we have already studied. In blood clotting, calcium binds with prothrombin. In presence of thrombokinase enzyme, it becomes active thrombin. Remember, so blood clotting starts with calcium ion. और कहाँ पे मिला calcium? Tell me any other place where, any other area where जहाँ पे हमें calcium मिला. So calcium is required in muscle contraction over here. कोई जगह और जगह? Is this clear? Can we proceed? So TDBs not present in smooth muscles. TDBs का काम क्या है? It helps in the journey of calcium ion. It helps in the journey of calcium ion. Smooth muscles में not present. What about cardiac muscles? One in each sarcomere in Z disc. अच्छा, cardiac muscles में there is a special type of disc present which we call it as intercalated disc. क्या कहते हैं इसको? Intercalated disc. Fine. Elaborate sarcoplasmic reticulum present, less ER present, 1 to 8% of the cell volume. और cardiac muscles में same like smooth muscles, 1 to 8%. क्या? What is present? The elaborate sarcoplasmic reticulum is present over here, और यहाँ पे sarcoplasmic reticulum बहुत कम रहता है. Where? In cardiac and in smooth muscles. Tell me, सबसे ज्यादा एनर्जी कहाँ किसको लगेगा? Skeletal muscles को या cardiac muscles को ज्यादा लगेगा एनर्जी? Skeletal muscles को ज्यादा एनर्जी लगेगा. Clear? Very good. Okay. The next, no gap junctions. Present only gap junctions मुझे बोलना है. I think we have talked about in structural organizations animals gap junctions. Smooth muscles में present only in unit muscle. Cardiac muscles में gap junctions are present only in intercalated disc. कहाँ पे है? Gap junctions है only present where? In the intercalated disc. Gap junctions are present only in the intercalated disc. Shows aerobic as well as anaerobic respiration. Skeletal muscles में anaerobic respiration होने से क्या होगा? विशाल बोल बे. Vishal, what is going to happen if a mad dog is after you and you are running after some time? So pie cramp thodi pode jabi. Tell me the reason of cramp. We know that. Come on. Anaerobic respiration is going to occur, and that is going to lead into formation of lactic acid inside your muscles. So it can show aerobic as well as anaerobic respirations, but see, in smooth muscles mainly aerobic. What about cardiac muscles? Aerobic respirations. Source of calcium is sarcoplasmic reticulum. यहाँ पे source of calcium is SR, sarcoplasmic reticulum and extracellular fluid. And what about this? Cardiac muscles. Again, sarcoplasmic reticulum and extracellular fluid. Yes. Extracellular fluid. Outside muscle cell, everything is extracellular fluid. Outside muscle cell, every other fluid is extracellular fluid. Outside neuron, when sodium was present in higher concentration, sodium कहाँ पे था? Intracellular fluid या extracellular fluid बोलोगे? Extracellular fluid. Got the point? Exoplasm के बाहर वो क्या था? Sodium ज्यादा था. तो what we going to call it as ECF, extracellular fluid, and inside the cell, intracellular fluid. Okay. Types of skeletal muscles. दो तरह के skeletal muscles हैं. One is red muscles and white muscles. Red muscle fiber and white muscle fiber. देखो difference क्या है? We know that the Siberian birds, वो बहुत दूर से they travel a huge kilometer, बहुत ज़्यादा distance travel करते हैं with a single flight. Reason, they have got red muscle fiber, and red muscle fiber they have got more of mitochondria. अच्छा, एक चीज we have just बोलने के लिए भूल गए, muscle cell के अंदर mitochondria रहेगा नहीं रहेगा? Muscle cell के अंदर mitochondria रहता है नहीं रहता है? Where from the muscle is going to get ATP if there is no mitochondria? So mitochondria is called as the powerhouse of the cell. They are going to make ATP. Now think about it. Mitochondria को क्या कहते हैं inside muscle cell? They are called sarcosome. क्या कहते हैं? Sarcosome. Zome means what? Body. Sarcosome. याद रहेगा? Now mitochondria कहाँ पे ज्यादा होगा? Red muscle fiber में. That means in sparrow or in Siberian bird. क्योंकि स्पैरो यहां से उड़ के यहां पे जाकर क्या करेगा? वहां पे जाकर रेस्ट लेगा बाबा. उसमें है white muscle fiber, they have got less of mitochondria. So white muscle fiber, they have got less of mitochondria, or see, less low in mitochondria in white muscle fiber. See, absence of myoglobin and low in mitochondria. What is myoglobin? High in oxygen. Tell me, myoglobin we have studied as an example of what kind of protein?
Under biomolecule chapter, we have studied about 4 different types of protein are there. Ball ki primary, secondary, tertiary, and quaternary. Tell me, myoglobin was an example of. Quaternary? No, that is hemoglobin. Tertiary protein. Myoglobin is an example of tertiary protein. Myoglobin is an example of tertiary protein, and tertiary protein are made up of many bonds. Tell me, Durva, some of them. Hydrogen bond, ionic bond, covalent bond, van der Waals forces, disulfide bond. And that is why, can you just eat raw meat and digest it? What is the reason behind? क्या खाओगे उसका? मायोग्लोबिन हजम होगा, पेप्सिन भाग जाएगा आपके पेट से, है ना? কি করতে হবে তখন? You need to cook it. What is called cooking? While cooking, what you are going to do? You are going to break all the bonds. Tertiary structure को आप नष्ट कर दोगे, so that pepsin can bind with it and can digest it. Okay, red muscle fiber, they are rich in heme protein, myoglobin, and mitochondria. So they are rich in mitochondria. Can undergo slow, sustained contraction for long period without getting fatigued due to non-formation of lactic acid. तो Siberian birds में lactic acid form नहीं होगा. That's why they can fly long distance travel. Still, flight muscles of Siberian birds and back muscles of human. Think about it. आपके back muscle में red muscle fiber है. हाँ अजित, conditions apply. घर में जाकर काट के मत देखो. Okay, so your back muscles, they have got red muscle fiber. Red muscle fiber they have, because see, think about it. Right now you are in a sitting posture. You are in a sitting posture. कौन help कर रहा है आपको sitting posture के लिए? Back muscles are helping you. मैं खड़ा हूँ. कौन help कर रहा है मुझे? Back muscles are helping me to stand erect. Got the point? So back muscles, they have got red muscle fiber. Huge amount of mitochondria is present over there. And there's less chances of having lactic acid accumulation over there. But in case of white muscle fiber, absence of myoglobin and low in mitochondria, fast and strenuous activity for shorter duration of time and get tired soon. Like in case of flight muscles of fast flying sparrows and eyeball muscles. करो, घुमाओ ऐसे, देखो कुछ देर बाद क्या होगा, और नहीं कर पाओगे. Because white muscle fiber are present, which we have talked about. Durva, tell me one of the muscles present over there. In the neural control coordination, we have talked about some of the muscles present inside the eye. And tell me which cranial nerve helps in the movement of the eyeball. Oculomotor. This is number one. And the one we have talked about. If there has been some question भी solve किए थे. Injury हो गया एक nerve पे, तो eye muscles में rotation of eyeball में problem होगा. Abducens, 6 cranial nerves. Okay. Chalo, so that was the different properties of muscles. See, okay, properties of muscles. See the time. Properties of muscles. 721. Properties of muscles क्या है? See, the first property is all or none law. What is the meaning of this? All मतलब पूरा, none मतलब एकदम नहीं. अगर पास करोगे तो पूरा पास करोगे, ऐसा होगा कि सर आधे खोए नहीं, 50-50 सर, ऐसा होगा नहीं. मेडिकल में चांस मिलेगा या नहीं मिलेगा, ऐसा होगा सर, झूठे सर. All or none law, either all or none. If a muscle gets a threshold stimulus, the muscle is going to show its contraction. Adrian, जितना पढ़ लिया ह्यूमन फिजियोलॉजी, ऐसा और एक सिस्टम में है. Tell me the same system is followed by another physiology part of the body, another type of system in the body, organ system, और एक organ system है, which can show the same type of all or non law. उसको अगर threshold stimulus मिल गया तो वो काम करेगा, अगर सब threshold मिला तो वो काम नहीं करेगा. Tell me. Nervous system. When the dendrites gets a threshold stimulus, the neuron is going to help in the conduction of the impulses. So threshold stimulus अगर muscle को मिलेगा तभी वो contraction करेगा, otherwise नहीं करेगा. Got the point? Great. So all minimal strength of stimulus required to cause contraction. जितना minimal strength of stimulus is required for contraction is called all or none law. What is this latent period? What is latent period? The time period between the application of the muscle stimulus and the beginning of contraction. रिजल्ट के बाद पिताजी हथौड़े से मारा आपको, मारने के बाद कितने देर बाद आपके मुंह से आवाज आया?
आई थिंक यू नो, ऐसा तो आपने तो एनिमेशन में देख लिया। टॉम, स्पेशली टॉम ऐसा करता है मारने के बाद, है ना, चिल्ला नहीं पाएगा क्योंकि मालकिन सो रही है, पर पैर में लग गया, वो बाहर आकर आवाज किया, घर से बाहर आकर आवाज किया, चिल्लाया। गॉट द पॉइंट? वी हैव सीन दिस। दैट मींस टाइम पीरियड बिटवीन द एप्लीकेशन ऑफ द मसल स्टिमुलस एंड द बिगिनिंग ऑफ कंट्रैक्शन। द टाइम इज द This is the time when calcium ion is released from the sacral reticulum. तो थोड़ा सा समय लगेगा ना कैल्शियम आयन निकालने के लिए from the sacral reticulum. There will be some time. They are going to take some time, and that time is called latent period. क्या कहते हैं इसको? So immediately आप देखते हो immediately हो रहा है, उसमें माइक्रोसेकंड का डिफरेंस है बाबा, and that is a latent period. Show this is a property of all muscles. Property of all muscles. So देखो latent period. यहाँ पे झटका मिला, उसके बाद इतना पीक आएगा, उसके बाद कंट्रैक्शन होगा। Fine. So that is very important. Latent period. Latent period is a time gap that is needed for the calcium ion to come out of the sarcoplasmic reticulum. Come down to relaxation period. What is relaxation period? It is और एक property है. It is the interval required for the contracted muscles to regain its original relaxed state. ठीक है? Contraction जब होगा तो क्या होगा? What is going to happen to the length of the muscle? Muscle का लेंथ घट जाएगा, घटने के बाद कुछ देर टाइम लगेगा उसको टू कम बैक टू इट्स ओरिजिनल लेंथ, एंड दैट टाइम इज कॉल्ड रिलैक्सेशन पीरियड टू रिगेन इट्स ओरिजिनल रिलैक्स स्टेट। इन स्केलेटल मसल इट इज 0.05 सेकंड्स एंड इन विसरल मसल इट इज 2.3 सेकंड्स। विसरल मसल्स में टाइम ज्यादा लगता है। फाइन। व्हाट अबाउट रिफ्रैक्टिव पीरियड? इंटरवल ड्यूरिंग व्हिच अ मसल फाइबर फेल्स टू रिस्पॉन्ड टू अ सेकंड स्टिमुलस। इस गैप के अंदर अगर आप सेकंड स्टिमुलस दे दो तो मसल क्या नहीं करेगा? सेकंड स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस रिफ्रैक्टिव पीरियड इज हाईएस्ट इन केस ऑफ व्हाट? कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स में सबसे हाईएस्ट है। देखो, कार्डियक मसल इज हैविंग द लॉन्गेस्ट रिफ्रैक्टिव पीरियड, एंड दैट इज व्हाई कितना है? 0.1 टू 0.2 सेकंड्स। और स्केलेटल मसल में कितना है? 0.002 टू 0.005 सेकंड्स। shortest refractive period in case of skeletal muscles and the longest one in case of cardiac muscles. That's why refractive period ज्यादा है. That means the time हार्ट एक बार बीट किया, बीट करने के बाद थोड़ा घूम के आया, हवा खा के आया, उसके बाद फिर से आपके हार्ट और एक बीट किया, तो इस तरह से वो सारा दिन काम कर सकता है. That is how the heart, which you call it your heart right now, there were mass of tissues in your embryonic stage. थर्ड वीक में वो mass of tissue था और तब से वो स्टार्ट किया बीट करने के लिए. The moment it started off, तब ये लब डब साउंड नहीं था, गशिंग साउंड था. उसके बाद तब से स्टार्ट हुआ. आज तक रेस्ट लिया कार्डियक मसल्स, या आप चाहते हो आज रात को रेस्ट ले ले? अगर मेरा रेस्ट ले लिया तो हो गया ना. स्विच ऑफ करते हो कभी? हार्ट का स्विच ऑफ किया, काम कर रहा है अभी भी विदाउट एनी फैटिग. व्हाट इज द साइंस बिहाइंड इट? कार्डियक मसल्स नेवर गेट्स फैटिग ड्यू टू लॉन्गेस्ट रिफ्रैक्टिव पीरियड. उसको बहुत ज्यादा समय मिलता है, वो जो एनर्जी रिगेन करने के लिए बहुत ज्यादा समय मिलता है उसको. जो लॉस्ट हो गया एनर्जी उसको रिगेन करने के लिए इट गेट्स ह्यूज अमाउंट ऑफ टाइम. सो व्हाई कार्डियक मसल नेवर गेट फैटिग? बिकॉज इट इज हैविंग द लॉन्गेस्ट रिफ्रैक्टिव पीरियड. Now, if I ask you why skeletal muscles gets fatigued sooner, well, sir, it is having shortest refractive. उसको एनर्जी रिगेन करने का टाइम नहीं मिलता है, इसलिए तो हमें क्रैम्प होता है, इसलिए तो मसल्स फैटिग हो जाते हैं. बॉल बुझ लो ना. Any issues with this? Come on. Any issues with this? Sure. ये रिफ्रैक्टिव पीरियड है. और एक प्रॉपर्टी, this is another property. Tidiness is another property. What is tidiness? Continued state of contraction caused due to rapid succession of many stimuli. होल्डिंग ऑफ बुक. क्या कैसे? ऐसे पढ़ो बुक को, तो हेवी बुक है आपके मेडिकल कॉलेज का बुक, फाइन, ओके, पकड़ के रखे ऐसे. क्या होगा? क्या होगा? काम कर रहे हो नहीं कर रहे हो? फिजिक्स बोलेगा तो काम नहीं कर रहे हो, नो डिस्प्लेसमेंट. पर आपका पसीना आएगा नहीं आएगा कुछ देर बाद? हाथ काम क्या होगा? शेक करेगा नहीं करेगा? फिजिक्स बोल रहा है नो वर्क, आप इधर बोल रहे हो सर ये क्या हो रहा है? फिजिक्स सर को पूछो क्या हो गया. नो वर्क, नो डिस्प्लेसमेंट, नो वर्क डन. वर्क डन हुआ. व्हाट हैज हैपेंड? कंटिन्यूड स्टेट ऑफ कंट्रैक्शन कॉज्ड बाय रैपिड सक्सेशन. बोलो, बाइसेप्स कंट्रैक्ट करेगा नहीं करेगा? बुक को ऐसे पढ़ो,
कंट्रैक्टेड स्टेट में है, हाँ है सर, एंड दैट इज कॉल्ड टिटेनस. टिटेनस में क्या होता है? इट इज ऑल्सो कॉज्ड बाई अ बैक्टीरिया नेम्ड क्लॉस्ट्रिडियम टिटेनी. क्लॉस्ट्रिडियम टिटेनी. बट माइंड यू व्हाट हैपेंस ओवर देयर? लॉक जॉ. कभी देखा किसी का ये फेस ऐसे एक साइड में आ गया? फेशियल मसल्स में नॉर्मली होता है ये लॉक जॉ. फाइन. सो दे नॉट बी एबल टू स्पीक प्रॉपर्ली. टंग का मूवमेंट में प्रॉब्लम होता है. सो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड टिटेनस. रिगोर मॉर्टिस क्या है? रिगोर मॉर्टिस बंगाली में मोर, मोरेजा. मरने के पहले होगा, मरने के बाद होगा? बाद होगा. रिगोर मॉर्टिस. स्टीफनेस इन द बॉडी. मरने के बाद क्या होता है? बॉडी gets stiffened. State of body stiffening after death due to non-separation of actin and myosin filament. जो उनका अभी बोला था ना, मायोसिन से क्या लगा? एक्टिन के साथ. मायोसिन हेड. इन दोनों में क्या था? There was a connection. और वो कनेक्शन कनेक्टेड है जाएगा. समझ में क्या? Is not going to get separated. तो कनेक्शन रह जाएगा तो what is going to happen? Slowly the body is going to get stiffened. The body is going to get stiffened. State of body stiffening after death due to non-separation of actin and myosin filaments caused by non-availability of what? ATP नहीं मिलेगा तो क्या होगा? वो is going to remain in that condition. Actomyosin complex. I'm going to teach you the same in next class. Actomyosin complex कैसे बनता है? It's a huge science about that. यहाँ तक क्लियर है? Rigor mortis. Rigor mortis. ठीक है? So that's all about today's class. And next day we are अच्छा fatigue. अच्छा फैटिग थोड़ा देख लेते हैं. व्हाट इज फैटिग? जानते हो आप? फैटिग क्या होगा? इनएबिलिटी ऑफ मसल्स टू कंट्रैक्ट ड्यू टू डिप्लीशन ऑफ इट्स केमिकल्स एंड लैक्टिक एसिड अक्यूमुलेशन बाय रिपीटेड कंट्रैक्शन. क्या होगा? रिपीटेड कंट्रैक्शन करेगा तो लैक्टिक एसिड जम जाएगा. एनारोबिक रेस्पिरेशन इज गोइंग टू हेल्प इन फैटिग. सो फैटिग. आइसोटोनिक कंट्रैक्शन एंड दिस आइसोमेट्रिक कंट्रैक्शन. व्हाट इज दिस? आइसोटोनिक कंट्रैक्शन में क्या होगा? इन दिस कंट्रैक्शन टेंशन रिमेन्स सेम बट स्केलेटल मसल्स लेंथ चेंजेस. वॉकिंग एंड रनिंग, लिफ्टिंग और डंबल. बोलो लिफ्टिंग और डंबल को आप लिफ्ट कर रहे हो. बोलो डंबल को लिफ्ट कर रहे हो तो क्या होगा? टेंशन रहेगा नहीं रहेगा? इन दिस द कंट्रैक्शन टेंशन रिमेन्स द सेम बट स्केलेटल मसल्स लेंथ चेंजेस. मसल लेंथ चेंजेस. आइसो क्या है? टोनिक कंट्रैक्शन. आइसोटोनिक कंट्रैक्शन. व्हाट इज आइसोमेट्रिक कंट्रैक्शन? द मसल लेंथ रिमेन्स द सेम. आइसोमेटर. मीटर मतलब मीट्रिक. मीटर से आ गया. चेंज, देयर इज नो चेंज इन द लेंथ. सो व्हेन द मसल लेंथ रिमेन्स द सेम, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस हेल्प्स मेंटेन स्ट्रेंथ. कौन सा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग? ऐसा सुन लिया ना, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग. हाँ क्या होगा? लिफ्ट करेंगे या लिफ्ट ना करके भी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हो सकता है? प्लैंक करेंगे. कुछ पुल कर रहे हो प्लैंक में, दैट्स द लास्ट टॉपिक. क्लियर? So this is called isometric contraction. क्या कर रहे हो आप? Isometric contraction. So what is this? So this is isometric contraction. So these are the 9 different types of property of muscles. So next day what we are going to go? We are going to get into how the muscle contraction takes place. Myofilament का structure क्या है? Actin, myosin. These are the 2 proteins present over there in the which is under myofilament. Myosin किससे बना है? Actin किससे बना है? Actin are produced by what? There are 3 units. In actin there are 2 filaments. Actin filament, there are 2 what? Tropomyosin filament, and then there is 3 of the units which is called as troponin. But in case of myosin, it is made up of 300 to 400 meromycin. 300 to 400 meromycin. We are going to talk about that structure next दिन. And next दिन structure के बाद क्या पढ़ेंगे? Contraction of the muscles. What is the science behind contraction of muscles? We're going to study about sliding filament mechanism. Who gave sliding filament mechanism? It is Hansen and Huxley. We're going to talk about that also. And there's another person who has given the chemical changes in the muscles by Zent Georgi. We're going to talk about that. Clear? Ajiruk Thak? Sure, that's it. Thank you.